हाँ सर्ड्स में भी इसी तरह करते थे. सो इन दिस वन एज वेल 7 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा से वी वांट टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी इससे करेंगे. सो डिनोमिनेटर तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करो 7 प्लस आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. So the denominator will become 1 plus 1, which is 2, and the numerator will be 7 minus 1, 6 plus 2 iota. Is that right? So the complex number u that we end up with is t plus iota. Same answer? 7 iota. Oh yes, I missed out of it. Thank you. 7 plus 7 iota होना चाहिए. Thank you. So this will be 8 iota. And dividing it by 2 should give me 4. 3 plus 4 iota. 3 plus 2 iota is. Let's move on to the next part. Show on an Argand diagram the points A, B, and C representing by U, 7 plus iota and minus iota. U is what? 3 plus 4 iota. So let's take this. What is U? 3 plus 4 iota. This is U. This is U. And what is 7 plus iota? 7 plus iota. This is B, right? And C is 1 minus iota. 1 minus iota. This is C. इसको भी मैं A कह देता हूँ, U नहीं कहता. क्लैरिटी आ जाए. So this is A, B, and C. That is all we had to show. इसमें कोई मसले की बात नहीं है. A, B, and C. कुछ नहीं. What is the show on sketch A, B, and C representing U, 7 plus iota and 7 minus iota. Is that clear? सही है ना? Okay. So copy this so that when we need it, we have the figure right in front of us. Now the third part. The question is telling you how to do this. By considering the arguments of 7 plus iota and 7 minus iota, show that this. Pehle to argument I have already taught you this. I'll explain it again as well. If I'm finding argument of Z2 upon Z1, how do I find this? Turn your pages, check karo, how did I explain this? Argument of Z2 upon Z1 is what? जब मैंने बताया था तो मोस्ट ऑफ यू रिलेटेड, हाँ सर लॉग में भी ऐसे होता था. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 मेरे वेरी फर्स्ट पेज ऑन माय नोट्स में मिल जाएगा ये. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1. जिन्होंने नहीं लिखा हो दोबारा लिख लें, प्लीज राइट इट डाउन अगेन. So if you want to find argument of Z2 upon Z1, so that will basically be argument of Z2 minus argument of Z1. So what is the number that we get by dividing the two numbers? We will get argument of U, right? U is achieved by dividing the two numbers. So I can say argument of 7 plus iota minus argument of 1 minus iota. So how do I find the argument of U? U is point A in this one.
tan inverse of 4/3. What about argument of 7 plus iota? That is point B. कैसे निकालोगे इसका argument? 1/7. And what about C? Minus. Remember ये tan inverse का हम लगाएंगे इसमें. But how will we apply this? हम argument subtract कर रहे हैं. 1 minus iota का argument निकाल रहे हैं. That argument will be negative. And what is this? कितना है C का argument? गौर से देखो ना, you can clearly see it. pi/4 है नहीं है, 45 है या नहीं है. So that is, चाहो तो negative pi/4. And once you add it, minus minus आपके पास plus हो जाता है, and you end up with this equation. Is this clear now?